Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Chal. So let's start with our session. And again, this is not an academic session. आज हम यहाँ पर एक important point discuss करेंगे, specifically with respect to those students who have just started their preparation and they are targeting CLAT 2027. And now considering you are left with a period of 5 months time, and in those 5 months you have to cover all the subjects, and therefore you are also worried about the fact that how you will cover the legal reasoning effectively in these 5 months so that you can score at least 27 plus in your examination. And trust me, the plan which we'll be discussing today, इसको अगर आप 5 महीने तक follow कर लेते हो तो आपके लिए scoring 27 plus out of those 32 questions is not going to be a very difficult task. Be it a legal GK question, be it any passage based on CLK or any other thing with respect to the subject matter of your paper, आपके लिए वो score करना difficult as such नहीं होगा. Provided you will have to religiously and thoroughly follow this rule to the last nail. अब करना क्या है? करना क्या है उसके पहले let us understand that what are the essential elements or what are the skills which are required for the purposes of acing your legal reasoning in your CLAT paper. तो क्लैट की अगर हम लीगल रीजनिंग के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करें, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगल रीजनिंग पोर्शन, योर पेपर इज एन एंटायरली comprehension based paper, which means you will have to read passages, and because you will have to read passages, therefore the understanding of basic legal terms becomes the first important pillar of our plan. ठीक है, हमारे प्लान का जो पहला इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज अबाउट लीगल टर्म्स, फॉरेन फ्रेजेस एंड द लैटिन मैक्सिम्स व्हिच आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. द अदर थिंग और द सेकंड पिलर of our preparation is going to be the major laws, that is torts, constitution, contract and crime. Now you won't find the direct passages of tort or contract being asked like in the manner wherein you can say that the substantive portion is being asked out of that thing only, but still they remain very relevant because they give you the basic understanding to comprehend the rest of the topics as well. The third important pillar is your miscellaneous laws. The fourth pillar of the preparation for the next 5 months is going to be current legal knowledge. The fifth pillar will include your legal GK, and the sixth pillar will be your reading and your practice. So these are the 6 things according to which we will have to plan our months, our weeks and our daily schedule as well, keeping these things in our mind. That is the first one. This is the second, that is your major laws. Third, miscellaneous laws. Now we won't be spending much time in our major law other than the constitutional law. Constitutional law because it becomes an important part of your CLK as well. Majority of the legal GK questions are based out of your constitutional law only. So that becomes an important thing. But other than that, major laws में बहुत ज़्यादा time invest करने की ज़रूरत नहीं है. And therefore we should try to cover the major laws in the first month only. That is July. ठीक है. Fifth pillar will be legal GK. Fourth is your current legal knowledge, and the sixth is reading and practice as well. This is something which will simultaneously go on. And in this session, I will also discuss about कि भाई आप किन sources को utilize कर सकते हो, LE students also and non-LE students also. ठीक है? So currently, let's say we are at this curve. I mean, and this is a kind of a plan which can be used by even a dropper also. Even someone who has prepared or who has been preparing for the month from the month of January also. They can also go along with this particular plan. The first half should be based on concept acquisition phase, and the second half should be based on your mixed practice phase. जहाँ पर जो हमारा फ्लाई व्हील है,
ठीक है, दैट विल इंक्लूड कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रिहेंशन, करंट लीगल अफेयर्स, केस लॉज, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस. दिस इज द थिंग विच यू हैव टू फॉलो ऑन अ डेली रूटीन. वीकली अगर मैं बात करूं तो वीकली लेट्स से वी आर डिवोटिंग 100% ऑफ द टाइम टू लीगल रीजनिंग, या लीगल को हमने जितना भी टाइम दिया है उस टाइम में से हमने कुछ चीजों को डिवाइड करके वहां पर पढ़ना होगा. लाइक vocab and revisions of the thing should comprise 10%. That is daily refinement and memorization of legal jargon is required over there. Current legal affairs will take our 15% of the time during the initial phase. Tracking the latest bills, acts, and recent landmark judgments of the courts. 35% should be on your concept learning during the initial time. So the heaviest investment to build the foundational framework of legal reasoning. Try to read the articles or try to read the resources or passages of various topics so that you get a familiarity with those issues, okay, with those concepts. Then reading and comprehension, that is developing the stamina and analytical pacing required for CLAT. 20% हमारे वीक का strategic time यहाँ पर जाना चाहिए, and 20% to the practice questions, that is active retrieval and application of learned concepts. ये हमारा वीक का एक बेसिक डिविजन ऑफ द टाइम होगा, ठीक है. बट डेली अगर मैं रूटीन की बात करूं तो डेली रूटीन, लाइक इफ यू वांट टू डू लीगल ऑन अ डेली बेसिस एंड इफ यू वांट टू स्कोर 27 प्लस इन योर लीगल रीजनिंग इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, डिवोटिंग 3 आवर्स वुड बिकम अ बेसिक रिक्वायरमेंट ओवर देयर. अब आप उसके हिसाब से ऊपर नीचे उसको कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम स्लॉट या डिवीजन ऑफ द डेज बिटवीन द सब्जेक्ट्स, जैसा भी आपने बताया बनाया हुआ है अपना प्लान. बट जब भी लीगल को अगर आप टाइम दे रहे हो तो 3 आवर्स शुड बी गिवन. 45 minutes on concept learning or concept understanding, 45 minutes on the practice questions, 30 minutes on a daily basis on your current legal affairs, 30 minutes on legal passages, at least from those topics or related to those issues जो कहीं ना कहीं आपके लिए problematic है. So you can take one legal passage or you can take 2 to 3 legal passages. ठीक है. 20 minutes on vocabulary and Latin phrases and 10 minutes at the end of the day towards the revision of the things. Like you have covered certain legal GK related issues or one-liners or legal terms and maxims which you have understood of you or you have marked out of your passages or in legal articles, whatever the case may be. उस पे 10 मिनट आपको अपना इन्वेस्ट करना है. ये 3 घंटे आप डेली बेसिस पे यहाँ पर दोगे, ठीक है. नाउ 5 महीने के फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूं, सो जुलाई should be dedicated to contract, torts and constitution. कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हमें ये चीजें प्रॉपरली प्रिपेयर करनी होगी. ऑगस्ट विल बी रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड मिसलेनियस लॉज, लाइक आईपीआर है, इंटरनेशनल लॉ है, सो फैमिली लॉ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सेप्टेंबर entirely current legal affairs and cases. October is about advanced mixed practice, and November is again about revision of the topics and mocks and practice only. So we should be done with our theory of static laws by the month of August. ठीक है. अगस्त आते आते आपके मेजर लॉज एंड मिसलेनियस लॉज की थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो. सितंबर ऑनवर्ड्स आपके पास अगर कुछ पढ़ने के लिए बचा होगा, लाइक यू आर रीडिंग समथिंग न्यू, दैट शुड ऑलवेज बी अबाउट current legal affairs only. Nothing from the static law should be carried forward to the month of September. Okay, this is the thing which you have to follow. So the first month which we have is, okay, the first month which we have is related to our constitution, contract and torts. Now when it comes to legal affairs of the last 12 months become important for the purposes of your paper, and therefore try to cover, okay, therefore try to cover at least 2 or 3 months of your current legal affairs in this month of July. That is from your month of December, Jan and Feb. Okay, you can take the current legal affairs from the month of December, Jan and Feb. Now what you can do is, the LegalEdge student, they will eventually are going to get a new magazine from the institution which will be covering those topics. आप वहां से cover कर सकते हो, या whatever you want to refer to, you can refer to those things as well. Otherwise you can go to the YT channel. LE के ही YT channel पे आपको monthly roundups मिल जाएंगे. So cover the monthly roundups from here. ठीक है, cover the monthly roundups from here
और वीकली टारगेट आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स, ब्रीच एंड रेमेडीज, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिविजन, दिस शुड बी डन। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स करंटली न्यूज में चल रहे थे या बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में से वो आपकी कवर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे 20 पैसेजेस मैंने आपको कहा है अदर देन 300 क्वेश्चंस ऑफ द मंथ, ठीक है। 300 क्वेश्चंस तो आपको मंथ में सॉल्व करनी है, दैट मींस दैट कम्स टू क्लोज टू 10 मॉक्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 10 मॉक के आसपास वो चीज बन जाती है आपकी। तो 300 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूँ कि आप 6 या 8 मॉक तो दोगे ही इन द मंथ ऑफ जुलाई। 6 मॉक तो बेयर मिनिमम सब सॉल्व कर ही रहे होंगे, राइट। सो अराउंड 180 क्वेश्चंस वहां से आपके कवर हो जाएंगे, बाकी आप सेक्शनल टेस्ट के फॉर्म में कवर कर सकते हो, ठीक है। ये जो लेकिन 20 पैसेजेस मैंने आपसे कहा है ना, 20 पैसेजेस के लिए यूज योर प्रीवियस मॉक्स, लीगल आर्टिकल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ रीडिंग थिंग्स। नाउ एली स्टूडेंट्स इसमें स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं कि आपकी आरएसएम 1 में, इन योर आरएसएम 1 दैट इज रैंकर स्टडी मटेरियल 1 ऑफ लीगल रीजनिंग, वहां पे मिसलेनियस लॉ के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स गिवन है। यू विल फाइंड अराउंड 100 टॉपिक्स व्हिच आर गिवन ओवर देयर, ठीक है। उनमें से कुछ टॉपिक्स आप निकाल के रीड करना शुरू करो, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें 20 एडिशनल टॉपिक्स के साथ आपको अपने आप को फेमिलियराइज करना है, and that is only for the purposes of reading things, and this is something which will be continuing from for the next 3 months as well. ये आपकी सॉल्विंग होगी। एंड 15 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, 15 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू रीड द एंटायर जजमेंट, पॉसिबल नहीं है। अब जजमेंट ढूंढ पाना और आइडेंटिफाई कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर टू द केस फाइल्स प्लेलिस्ट ऑन द वाईटी चैनल ऑफ लीगल एज। लीगल एज के यूट्यूब चैनल पे केस फाइल्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे जजमेंट्स को ब्रीफली समराइज किया गया है ताकि कॉन्सेप्ट्स के साथ आप फेमिलियराइज हो जाओ, सो दैट इफ यू गेट अ पैसेज ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इन द और बीइंग डेल्ट इन दैट जजमेंट, वो चीज आपको क्लियर हो जाए। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू इन योर मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त की अगर हम बात करें तो हमें हम स्पेशलाइज लीगल डोमेन्स में एंटर करना होगा। क्रिमिनल लॉ विल बी कवरिंग ओवर हियर बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉश, पॉक्सो और जेजे एक्ट, along with miscellaneous laws as well, like family, IPR, international consumer protection law, environmental law, POSH, POXO, and JJ. These are the things which you must cover in the month of August. फिर क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स यहाँ पर कवर करो, क्रिमिनल ऑफेंसेस कवर करो। कहाँ से कवर कर सकते हो आप चीजें? रेफर टू योर स्टडी मटेरियल ओनली, योर क्लासेस ओनली, डोंट डू एनीथिंग एल्स। दिस इज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट टू द एली स्टूडेंट, डोंट रेफर टू एनी अदर सोर्सेज ओवर देयर, just refer to your classes, your material, that is more than enough. And with respect to the miscellaneous laws topic, I'll be starting, like I've started a series, I've put that one on hold. I'll be continuing that in the coming weeks, wherein we'll be covering those topics of your miscellaneous laws only. वहां से आप उस चीज को कवर कर सकते हो, वन सेक्शन वन टॉपिक, दैट्स अ सिंपल प्लान अबाउट दैट, ठीक है। अगेन यहाँ पर 20 पैसेजेस हमें कवर करने हैं। दिस 20 पैसेजेस आर रिलेटेड टू, दिस इज अ मंथली आउटपुट कोटा, ठीक है। 20 passages, that means 20 topics with which you will familiarize yourself. Use the previous mocks, your materials, your legal articles from the online sources, the PDF which is provided by the institute, and so on and so forth. 350 questions should be the target in this month. And now we should be in the habit of solving at least 5 or 6 passages in a single go. July is something wherein, if we have just started the preparation, July is the time period wherein we will be getting the understanding of maintaining the accuracy in the paper or achieving that accuracy in the paper. August onwards, it should all be about your maintaining the speed along with the accuracy. So number of questions will increase and 15 case briefs as well. Landmark judgments, like historical landmark judgments of the Supreme Court, the issues which are discussed in the historical landmark judgments, लीगल एज स्टूडेंट्स के पास तो भाई जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की आरएसएम है, आरएसएम 1 में जो आपकी थ्योरी दी हुई है, वहीं पे लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस, उनको आप रेफर कर सकते हो। केस फाइल सीरीज इज कंटिन्यूइंग, यू कैन यूज दैट। रिसेंटली अभी हमने क्या किया था, वी हैव कंडक्टेड अ सेशन ऑन वाईटी, ठीक है, wherein we have discussed about the landmark judgments of the Supreme Court from January to June. Second part of that will be coming pretty soon as well. तो इन सब चीजों से आप 15 जजमेंट्स, 15 केस ब्रीफ्स आप यहाँ पर कवर करोगे, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सितंबर की अगर हम बात करें तो नाउ द फोकस, वी आर डन विद आवर स्टैटिक लॉ, वी आर डन विद द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिसलेनियस लॉ। सितंबर ऑनवर्ड्स इट इज ओनली अबाउट करंट लीगल अफेयर्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल जीके एंड योर प्रैक्टिस. So the focus area from September onwards should be current legal affairs, landmark judgments, and weekly target should be legal current affairs integration with your practice.
recent bills and acts, उनकी proper understanding आपके पास होनी चाहिए, recent Supreme Court judgments and landmark constitutional cases as well. Now the number of passages will increase to 25 passages, 400 questions in a month, and at least जो अब तक आपने 40-50 केस रीड कर लिए होंगे, 40 के करीब केसेस रीड कर लिए होंगे, उसमें से 20 केसेस की थ्योरी यू शुड हैव मेड एज अ शॉर्ट नोट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, देन लेट्स कम टू अक्टूबर. अक्टूबर जहां पर प्रैक्टिस ही है, अब सिर्फ एडवांस मिक्स प्रैक्टिस, 2 passages, 20 questions every single day of a specific topic. This is not something which will be including in your assignment practice जो आप 500 questions के through दोगे. 4 legal sectionals, like weekly legal sectionals of specific topic, bare minimum ये तो करना ही है. ठीक है, एंड लीगल सेक्शंस अब आपको सिंगल सिटिंग में सॉल्व करना शुरू करना है अक्टूबर के बाद. ठीक है, और यहां तक आते आते यू वुड हैव अंडरस्टूड जुलाई, अगस्त, September. By the time you will come to October now, you would have understood that what is your weaker portion. So 2 passages, 20 questions, 2 passages or 20 questions of those specific topics which are your weaker areas. That is something which you will focus in the month of October. Okay? And when it comes to November, it is all about your revision only of legal GK. Revision of your legal GK, because you would have got into the habit of reading the things. Constitution contract का revision, criminal tort का revision, current affairs and judgments का revision, mock test and rigor error analysis. That is it. November is not going to include any other thing. और 3 घंटे डेली बेसिस पे अगर आप इतना करोगे ना, तो ये चीजें 60 डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आप अपने आप को फेमिलियराइज कर चुके होंगे. बाय द टाइम यू विल रीच अक्टूबर, यू विल बी डन विद दीज मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस. केसेस की अगर हम बात करें तो इतने केसेस आप पढ़ चुके होंगे, एंड ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन सफिशिएंट. सो वीकली जो चीजें हमारी कवर हो जानी चाहिए वीक ऑन वीक बेसिस पे. ठीक है, वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर मैं बात करूं, जो वीकली आपके टारगेट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 passages, 80 to 120 legal reasoning questions, legal GK questions, legal vocabulary words, sectional tests, current legal affairs month should be covered in a given week, Supreme Court cases, and Latin and foreign legal phrases. This should be your weekly legal target which you have to cover. And trust me, अगर इतना कर लोगे, इतने प्लान को अगर आप अगले 5 महीने के लिए फॉलो कर सकते हो ना, that is more than sufficient. ठीक है, now other than that, I can understand we have a pretty much heavy confusion with respect to covering legal GK. Okay, because CLAT gives us surprises, and for the last 2 years, we have seen the passages asking us very objective questions related to legal topics which are given over there. So covering legal GK specifically becomes a very difficult thing. कि कहाँ से cover करोगे, कितना cover करोगे. Therefore, my one basic question to you is that we are ready to do whatever is needed for the purposes of your preparation. ठीक है, सो इफ यू गाइज वांट कि भाई लीगल जीके को हम एक क्विज के फॉर्म में कवर कर लें, एंड दैट क्विज विल बी फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर टिल जून एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट इफ दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, द डे वन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, you should remember that. ठीक है, बट इफ यू नीड दिस पर्टिकुलर हेल्प फॉर द पर्पसेस ऑफ कवरिंग योर लीगल जीके, so we can have that. You can let us know and we'll align it as soon as possible, depending upon the need of, what kind of need you guys feel with respect to your legal GK only. Okay? So this is the plan. Just follow it for the next 5 months, and scoring 27 plus will not be a very difficult task. Okay? Other than that, कोई भी requirement है आप लोगों की legal को लेकर specifically, you can let us know in the comment section along with that legal GK quiz वाला point, and rest will be happy to help you out. ठीक है? बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet soon guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.